चल आजा। वन पेज वन नंबर बता फाइव दो उसका। 115 पेज नंबर आई थिंक वही है वही ना 101। पॉल। गेस्ट आए थे बता आज सुबह सुबह मेरे घर पे। अच्छा, तो तूने उनको गाना सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा गाना। एक अच्छा है वो लोग के ऊपर ही। कौन सा बता दो तो तू बता कौन सा गाना। मेरे यार, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, भले हैं जैसे भी है। नहीं नहीं यार ये तो नहीं है बट चल ठीक है। Determine whether or not there will be an overall tax saving and national insurance contributions in the year ended 5th April 23. If Paul Limited business is instead run by Paul as a sole trader from 6th of April 2022. Okay. Paul managing director and 100% shareholder in Paul Limited. एक मिनट हाँ क्या भेजा है राहुल ने चैट में। रिश्तेदार नहीं नहीं, भेज जरूरत नहीं। अरे भाई क्या चैट। For the डिटरमाइन year होगा। ended 5th April 23, Paul Limited's tax adjusted trading profit before taking account of directors' remuneration is forecast to be 1,75,000. Paul intends to extract all of Paul Limited's profits after allowing for corporation tax. This will be achieved by paying himself gross director's remuneration of 8,000 and dividends of 1,35,270. Paul wants to know if it would be beneficial to cease trading via Paul Limited on 5th April 22 and instead run his टू business from फाइव 6th April 22 एक महीना towards the अल्टा। sole trader. सॉरी। His tax adjusted अल्टा trading profit करने, for the year अल्टा। ended 5th April एक मिनट would remain unchanged at 1,75,000. हाँ अब बोल all time. अल्टैप करने के लिए ना, हाँ अल्ट और स्केप दबा फटाक से होता है। alt और escape. हाँ हाँ, बहुत फास्ट होता है। we will not have overall tax saving insurance contributions होगा मुझे तो लगता है. Okay, start. चलो भाई.
class 1 employee, NIC class 1 employer. The amount is lower than 9,100 and 12,570. When I see class 1 employee employer चार्ज नहीं होगा. इनकम टैक्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया. बचता है सिर्फ कॉर्पोरेशन टैक्स मेरे हिसाब से. ठीक. Over limited tax adjusted trading profit is before taking into account forecast is 1,75,000 before taking into account of director's remuneration. Pays himself director's remuneration and dividends of इतना. So मुझे लगता है corporation tax भी एडजस्ट होके ही आएगा. कॉर्पोरेशन टैक्स जो 1,75,000 है एक्चुअली भी 8,000 और इतने का माइनस होके हमें जो अमाउंट मिलेगा वो क्लास 1 एम्प्लॉय नहीं है. अभी NIC क्लास 2 आएगा और यहाँ पे NIC क्लास 4 आएगा. तो क्लास 2 का हमें फिक्स्ड ही रहता है गाइस 164. Any other income for tax? Paul wants to know if it could be beneficial to cease trading on the April 22 and instead run his business from 6th April 22 onward as a sole trader. His tax adjusted trading profit for the year ended would remain unchanged at 1,75,000. So हम लोग बड़ी retain back. वो समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए. क्लास 4 मुझे नहीं लगता इससे मैच हुआ. क्लास 4 सॉरी 5th वन ये भी हो गया. ओए, ये क्लास 4 तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स अभी शायद नहीं आएगा. तो मेरे हिसाब से the tax saving that will take place is 4,350.
is that you are expected to calculate income tax payable by Paul, any NIC payable by Paul and Paul Limited, the corporation tax liability of Paul Limited for the year ended 20, assuming that he continues to run his business by a company. एक minute. Corporation tax limited. Right, corporation tax तो इसमें आएगा ही नहीं ना. 1,75,000 minus this ये तो सही था. But if we see corporation tax तो इस केस में आएगा ही नहीं guys, क्योंकि ये corporate चला ही नहीं रहा है from a corporation tax perspective. Let's try something here. Fifth, fourth, tax adjusted trading profits. Let's check. Let's just check. 377,000, 40%, 112,300. Six three seven zero. ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है, but let's just check here. क्या डिविडेंड माइनस होंगे? मुझे नहीं लगता डिविडेंड माइनस होंगे, राइट? पहले देख लेते हैं. Should assume that हमें determine करना था how much tax saving will take place if Paul Limited's business is instead run by Paul as a sole trader. लेकिन फिलहाल के लिए हमारा नेगेटिव में जा रहा है 408. So tax saving won't take place. अच्छा नहीं, whether or not there will be a tax saving. Okay. हाँ, so there won't be a tax saving because 408 का हमें आ रहा है डिफरेंस फिलहाल के लिए. Let's check. 115, 115, 115. Paul Limited. Corporation tax 31730. 31730. Income tax 39654. 39654 almost. ये साइड तो सही है. There will not be any class 1 employer बराबर 63710, 63710. Class 2 तो बराबर ही आएगा. Class 4 7918, 7918. So there is not. There you go. 408. Tax increase. Conclusion: if Paul runs his business as a sole trader, then overall tax and NIC will be 408 more compared to running the business as a limited company. Okay, perfect guys. ठीक है, ये आंसर पूरा सही था. Thank you so much for watching and bye.